मैं हूँ आप आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है मिस्टर अभिनव। ये अपनी हायर स्टडीज़ लंदन से कर रहे हैं और साथ में ये जॉब भी वहीं से कर रहे हैं। अगर आपका भी सपना लंदन जाने का है, वहाँ जॉब करने का है या फिर हायर स्टडीज़ का है, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद खास और ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। सो हाय मिस्टर अभिनव, कैसे हैं आप? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप माइक जो है वो म्यूट पे है शायद आपका, अनम्यूट कर दें। Yeah, got it. या थैंक यू सर। तो वेलकम टू आवर शो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बिल्कुल अच्छा। जी, तो सर मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे है, वो ये है कि सर आपने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए लंदन ही क्यों चूज़ किया? हमारे पास वैसे काफ़ी और ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, कनाडा, दुबई, तो सर आपने लंदन ही क्यों चूज़ किया? Mm, so when I started पहले मैंने अमेरिका के लिए अप्लाई किया था फॉर माय हायर स्टडीज बिकॉज इन अमेरिका वाज अ गुड प्लेस देन somehow I was not able to make it. Then second option was for me at that time was UK. तभी मैं UK आया या एंड अगर हम यूके के बारे में बात करें तो आई थिंक लंदन इज़ द बेस्ट प्लेस ऑल्दो इट्स एक्सपेंसिव बट स्टिल लाइक या लंदन इज़ द बेस्ट या जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि जो आप लंदन आपने चूज़ अपने हायर स्टडीज़ के लिए, तो सर जो जब आप अपनी हायर स्टडीज़ कर रहे थे तो हम कहीं न कहीं ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी प्लेसमेंट्स भी उसी कॉलेज से हो जाएँ। लेकिन एज़ एन आउटसाइडर हमें काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो सर आपको प्लेसमेंट्स का अगर हम आपसे पूछें तो सर क्या रहता है लंदन के कॉलेजेस में क्या स्कोप रहता है प्लेसमेंट्स का? यू नो लंदन एजुकेशन के लिए यू नो वन ऑफ द like most recognized city in this world because if you talk about the universities, the best universities in the world, so you'll find those universities in London. So initially मैंने imperial college of london काफ़ी दो तीन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए अप्लाई किया था but somehow I was not able to make it. Then uh, like I choose University of East London, although University of East London जो है वो लॉ के लिए काफ़ी जानी जाती है बट स्टिल लाइक आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट बट आई डिड माई MBA in finance from University of East London. Yeah. जी, ओके। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया मुझे कि लंदन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ में से है। तो सर एज़ अ स्टूडेंट वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता होगा, है ना? Yeah, क्योंकि it's क्या a होता good. है कहीं न कहीं ये सुना है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ आवर्स होते हैं। उन आवर्स में आपको आप अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं लाइक 7 टू 8 आवर्स, 12 टू 15 आवर्स। तो सर लंदन में एज़ अ स्टूडेंट आपको कितने आवर्स अलाउड होते हैं अगर आप स्टडी के साथ-साथ जॉब भी करना चाहते हैं? या एज पर एज आई एम कंसर्न ये एक इंटरनेशनल लॉ है जिसमें आप डजेंट मैटर आप कौन सी कंट्री में हो बट स्टूडेंट्स दे आर ओनली अलाउड टू डू आई थिंक 20 hours in a week. मुझे भी जी, इतना अलाउड था. राइट नाउ आई एम ऑन माई PSW so I can work for the full time but initially I can do the work only for 20 hours in a week but still जी, somehow students do more than 20 hours but ये like country to country like different rules somehow. In your vacation time some universities give you uh, like extra hours also, like you can work more than 20 hours. And yeah, it was difficult to survive in London. Yeah. जी, ओके। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि लंदन का जो अगर हम एमबीए का सोचें, तो सर हमारा टाइम पीरियड कितना होता है? कितने टाइम पीरियड में हमारा मास्टर्स चाहे वो हम एमबीए को ले लें या किसी और चीज़ को ले लें, कितना टाइम पीरियड वहाँ पे हम रुक सकते हैं? और जब हमारा कोर्स खत्म हो जाता है यानी कि 1 साल या 2 साल के बाद, तो उसके बाद हम कितना टाइम वहाँ पे रह सकते हैं? Yeah, so time period for higher studies. So it also depends, varies from university to universities. किसी किसी यूनिवर्सिटी में
दे वो एक साल में ही आपका कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं, बट सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज दे टुक अराउंड 1.5 year, and some of the universities they like they took around 2 years for their masters. And there is a PSW system like in England, like in Britain, like it's called the post graduation work permit. So for for the students like जिनका कोर्स एक साल का है, some of the universities they gave them the time period of 1.5 year, yeah, to like get a job. And for 2 years like it goes up to 3 years, and maximum 3 years like for higher study students after their studies, the government here gave them the time period of 3 years maximum, yeah. ओके, And this in ओके, this time periods they can like they should have their job, otherwise they have to leave this country. And yeah, so ओके, this is a PSW system, and this is how it works. ओके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है लंदन। तो सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जब आप लंदन आए तो आपको कितना फाइनेंशियली चीज़ों को फेस करना पड़ा? और आपने जो एक फर्स्ट जॉब होती है, जो हम कहीं जाते हैं तो हम करते हैं और ऑब्वियसली जब हम लंदन जैसी बड़ी सिटी में जाएँगे तो हमारे लिंक्स नहीं होते हैं, हमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे रहा था? आपने वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे फेस करी और आपका पहला जॉब क्या था सर? Yeah, London. Yeah, it's very expensive city. जी, But you know, London is separated into various zones. So जी, the central London is the most expensive part of the London, like where you'll find the London Bridge and all the monuments and the हुँ, uh, like all those things which are famous in London. Those are situated in central London. So जो central London है वो काफी expensive है. And I live in East London, the place called Barking. It's not much expensive, and yeah, initially मुझे problem हुआ, yeah, but somehow like if you live in a London like alone, so जी, it will be difficult for you until unless your back end is very strong. So starting में problem face हुई. uh, right now till now, like I share my room with my partner, like yeah. So in this way like we can manage our finance, moreover my first job. So yeah, it's also a good question, like because when I came to the London, like it's very difficult to find a job in a London, yeah, but somehow I managed to do so. And the first job I got in a grocery store as a accountant, yeah, you can say as accountant, like so I worked for 4 months there. Yeah, and it was a nice experience. Like every day you met with the new people, and I worked in the central London, so my wages were high. हुँ, Yeah, and ओके, that's it. Yeah. या पर अगर हम आपसे पूछना चाहें एज़ अ स्टूडेंट आपकी लाइफ कैसे रही लंदन में? जब आप अपनी मास्टर्स कर रहे थे और जब आप जॉब कर रहे थे, तो सर वो टाइम पीरियड कैसा था? क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्टूडेंट को ये सब चीज़ें मैनेज करना, जॉब के लिए, क्लासेस के लिए, ये टाइम मैनेज आप कैसे करते थे और कितना डिफ़िकल्ट होता था जब आप अपना कॉलेज अटेंड करने के बाद अपने जॉब पे जाते थे या अब आप नाइट में या जॉब करते थे? सर वो टाइम आपने कैसे फेस किया और क्या-क्या चैलेंजेस थे उस टाइम? So first of all, the things in England is quite different from India. Like in India, like if we are doing our studies, so uh, we have to attend our college at least for 5 days in a week. But here like I just like went to the college only for 2 days in a week, so it was not hectic, but still like I was doing side by side job also. So to although I'm doing a 20 hours, but still like we have to do the job every day, so it was quite difficult for me to attend my college and side by side to do my study also. So it was quite difficult for me at that time. But
here the things works in this way, like everyone is so much busy in their life. So yeah, so it was difficult for me, but somehow I did manage and finish my studies and got my degree in MBA in finance. So yeah. नाइस। तो सर अब जो क्वेश्चन है वो कुछ आप अपना पर्सनल भी बता सकते हैं कि मैं आपसे कोई एक ऐसी चीज़ पूछूँ जो लंदन की, यूके की ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया और इंडिया की एक ऐसी चीज़ जो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू यूके? Mm, yeah, there are a lot of things like in England which are definitely better than India. First of all, if we talk about the system, like the management the system, how the things run in this country is much better than India. And second of all, if yeah, if I'm talking about the system, like you can include everything, uh, like system, the government, like how the government work, how the NHS works. Like NHS is a National Health Services, like which is the medical facility. So it's also much better than India because uh, when I came here, everything is free. If you talk about the education, education is free. No matter if you're doing the primary education or secondary education or higher education, everything is free for the residents from the UK. And if you talk about the medical facilities, so it's not about the UK residents, but the medical in England, it's free for everyone, no matters you belong to like different country or yeah. So yeah, a lot of things which are yeah better in UK, and I must say the things which are better in India, like as compared to um yeah, there are a lot of things in India which are like better than England, like the social networks. I must say the social network, the social life here, people like don't have their the social life. They hardly met with their the neighbors. Yeah, but रिलेटिव्स, in India, yeah, relatives, yeah, relatives you can फैमिली। say they hardly know their relatives, yeah, but still like social life in India is much better than in England, yeah, ओके, because people are cooperative also, and yeah, you can say people are cooperative, like they do talk with other peoples, but here everyone is busy in their own life, yeah. So this is, I ओके, must say, the social life, yeah, social life, yeah. ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर कि जब हम हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में जाएँ, तो सर हमारा जो स्टडी वीज़ा होता है, वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। जैसे हम कह लें 1 साल या 2 साल, तो सर बच्चे जो होते हैं वो 1 या 2 साल में इस चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते हैं कि अब हमारा आगे क्या होगा? बिकॉज़ स्टडी वीज़ा तो हमारा खत्म होने वाला है 1 या 2 साल में। तो सर एज़ अ स्टूडेंट हम वो स्टडी वीज़ा के रिन्यू करवा सकते हैं जब तक हम स्टडी कर रहे हैं? या हमें वो सरकार जो है कुछ टाइम देती है ताकि हम वापस रुक के वो स्टडी वीज़ा रिन्यू करवा सकें? या हमें इमीडिएटली बाद अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है? Yeah, it's also like yeah, I'll tell you like इंग्लैंड में क्या डिफरेंस है बाकी कंट्रीज की वजह से, बिकॉज इंग्लैंड एक काफी लाइक इट्स अ स्मॉल कंट्री, yeah. हुँ, So if you talk about the density of the population, it's very high just because of the size of this country. So ये country ऐसी है, like if you go to the Canada, let's take an example of the Canada. If you go to the Canada में एक student है, like he completed his studies like in higher education, then if that student wants to stay in Canada, so हुँ, their government will give him an option like तुम जाओ, तुम कहीं outskirts में जाके country side जाके settlement ले लो and spend 1 or 2 years, they will give you the green card. But in this country, just because it's a small country, so हुँ, here the rules are different, and in England the rules are different from America, the rules are different from Canada, Australia, New Zealand. So here the यहाँ की गवर्नमेंट ये बोलती है आपको कि you have to spend 5 years, at least 5 years. There are the kind of visas. So
I'm on a PSW2 visa. So yeah, it's a huge kind of thing. So I'll tell you in the shorts. एक PSW रहता है. So after तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो तो यहाँ की गवर्नमेंट तुम्हें ये बोलती है कि at least you have to spend 5 years To get a with visa. a, yeah, 5 years, and not have to spend only 5 years, but working in some of the, like uh, some working with some of the firms which are जी. registered in uh, which are registered by the UK government. ओके. ओके. सो आपको 5 years तक यहाँ किसी कंपनी में काम करना पड़ेगा हाँ. जो कि लीगल तो कंपनीज है. वो ऑल्दो यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी वीजा. कंपनीज हैं. या सो आपको यहाँ किसी ऐसी कंपनी में काम करना पड़ेगा 5 years के लिए. देन ओके. then you can apply for your uh, British passport or I indefinite to remain, like it's a kind of things. Yeah, indefinite to remain. And yeah, at least you have to give 5 years. And if you have if you're having the PS1W visa, so you need to spend only 3 years ओके. otherwise. And if you're talking about if you're not working with some company, after your graduation, so ओके. here government, here like the government of UK will give you the tenure of 3 months. So within 3 months you have to find your job after your graduation, otherwise you have to leave this country. And ओके. if you're not if you are unable to do this, then straight away they're gonna deport you. Or the second ओके. option, you have to live as a illegal immigrant, whatever you can say. Yeah. So this is how the things work in this country. Yeah. ओके. But तो there are very loopholes also. Like there are very loopholes also. Some people, like they try to get a settlement by the asylums. So they are different laws. In every law there are the loopholes. So in England also there are very loopholes. But this is the best legal way to stay in this country, like to get sponsorship from one of the, like renowned companies, and stay for 5 years. After that, you can apply for ILR, and you can easily get a British passport within 7 years. And right ओके. now, what I'm doing, like I'm on a sponsorship with one of the company. Yeah, with ओके. one of the agency. So I'm working as a legal. Yeah. ओके. 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 तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स काइंड ऑफ मैसेज. जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे लंदन के लिए? या यही मैसेज रहेगा कि अगर आप इंग्लैंड आ रहे हो, सो लाइक बी फोकस कि आपको करना क्या क्या है. बिकॉज इफ आई टेल यू द, like the not exact value, but the rough data. So 50%, like 50% people, like they unable to get their PSW in England. Hmm. Okay, and the 50% who are able to get the PSW, 50% of them are unable to find a job. And out of 50, and yeah, so the remaining one, if सो उनमें से भी 50% कुछ ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन वो कर देते हैं. सो इट्स अ रफ डाटा, लाइक ओनली 10% ऑफ द पीपल हु आर कमिंग इन इंग्लैंड, वो अपना वो अपने जो 5 साल आफ्टर ग्रेजुएशन, जो 5 साल का जो उनका टेन्योर रहता है किसी कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप में, वो कोई 10 या 15% ही होते हैं जो अचीव कर पाते हैं. रेस्ट, ओके. या वो नहीं. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, दैट्स व्हाई students, they go to the Canada, they go to the New Zealand, they go to the America, they go to the rest of the countries. But like they have a least student like who comes to the England. And the one more thing about the government of the England, after every 2 years they changes the rules. ओके. Yeah, for the ओके. students.
for the immigrants, yeah, for everyone. So this is also, yeah, different thing. Yeah. Thank you, Mr. Avinav. Thank you so much for this Yeah, beautiful thank you. conversation. एंड ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें दुबई की दुनिया के साथ। थैंक यू। Thank you. Bye bye.